Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all to my next class and I hope you all are doing well. Hope कि पिछली वीडियो मेरी थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी किसी ना किसी तरीके से. So without wasting any time, let's get started with this particular video in which we are going to discuss the MCQs of physics. ठीक है, तो ये MCQs पे based last video होगी. इसके बाद I am going to make a video on ऑल दोज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, MCQs जो भी है, लेकिन मॉडल पेपर के. ठीक है, केमिस्ट्री और बायो के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, यू हैव टू चेक द प्लेलिस्ट. और जो बायोलॉजी के MCQs है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर वीडियो की लिंक डाली हुई है जो साइंस से रिलेटेड है. सो डू गो एंड चेक इट आउट. ठीक है, so let's get started. आइडेंटिफाई द सिंबल. कौन सी सिंबल है ये? रेजिस्टर. आइडेंटिफाई दिस सिंबल. इट इज अ मीटर. रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला. V is equal to IR. 1 micro ampere is equal to 10 raised to power minus 6 ampere. ठीक है, next, what is the unit of electric current? It is ampere only, right? SI unit of potential difference, it is volt. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor, cell or battery. SI unit of resistivity, it is ohm meter. On what factors the resistance of a conductor depends? It depends upon length. It depends upon area of cross section. Then temperature and nature of material. Okay. On what factors? ये तो हो गया. SI unit of electric power, that is watt. Commercial unit of electric power, kWh, kilowatt hour. 1 kWh is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joules. ये कहीं पे भी लिखा होता है आपकी बुक में, easily मिल जाएगा आपको. How is voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between two ends? It is connected in parallels. Next, in which configuration a fuse is placed in a device? Series. On what factors the resistivity of a conductor depends? It depends upon the material. Okay. Temperature also, elasticity also, but write down material. Fine. Where was I? 16th. Name any two appliances which are based on the application of heating effect of electric current. That is electric heater. कोई भी लिख दो. Electric iron, electric fuse, write anything. What happens to resistance of a conductor when its area of cross section is increased? Resistance decreases. Resistance decreases. Why? Because resistance जो है it is inversely proportional to area. ठीक है, that's why it will decrease. Next, these two are numericals. You'll do it. Then define the term volt. ये भी आप कर सकते हो. Here are the questions for 2 marks. ठीक है, इसका आप screenshot ले सकते हो. Then here are the questions of for 4 marks. इसका भी आप screenshot ले सकते हो. Okay. Sources of energy. Burning of candle is an example of conversion of chemical energy. एक second. Of chemical energy into dash energy and dash energy. That is light and heat energy. Which form of energy is used by thermal power plant to convert it into electrical energy? It uses chemical energy. Next, which form of energy is converted by hydropower plant into electrical energy? That is kinetic energy.
डिफाइन स्लरी, स्लरी क्या होता है ये आपको आएगा, अ थिक लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर मिक्स्ड विद एनिमल वेस्ट, ठीक है, थिक लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ वाटर मिक्स्ड विद एनिमल वेस्ट दैट फार्मर्स यूज ऑन देयर फील्ड्स टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर, ठीक है, एक थिक लिक्विड जिसमें पानी के साथ एनिमल वेस्ट होता है और वो फार्मर्स यूज करते हैं अपने फील्ड्स में ताकि प्लांट्स जो हो वो उनकी ग्रोथ बेटर हो, ठीक है। नेक्स्ट, what percentage of methane is present in biogas? That is 60 to 70%, और कहीं पे आप देखोगे 50 to 70%, तो 50 to 70% के बीच में आएगा वो, ठीक है। What should be the wind speed that is required to maintain speed of turbine in windmill? You will see 15 kilometer per hour on net, but it's 8 to 12 kilometer per hour, ठीक है। What is good fuel? गुड फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसमें लो इग्निशन टेम्परेचर हो, जिसमें लो इग्निशन टेम्परेचर हो एंड जो जनरेट करे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट, okay, which has low ignition temperature and which generates a significant amount of heat, that is a good fuel. Name the part of a biogas plant where reaction takes place in the absence of oxygen. It is digester tank. Okay, next. Name any two elements that are used in fabricating solar cells. Silver and silicon. Okay, why is a solar cooker painted black from outside? क्यों? क्योंकि जो सोलर कुकर होता है वो जो ब्लैक कलर होता है वो 99% सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सोलर कुकर क्या ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाता है। गॉट इट? देन नेम द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज एनर्जी प्रोडक्शन इन सन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, ये भी आपके नोट्स पे होता ही है। मेंशन द पर्पस ऑफ ब्लैकनिंग द इंटीरियर ऑफ द सोलर कुकर, अगेन द सेम थिंग बिकॉज 99% ऑफ सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय this black color which helps solar cooker to absorb more heat. List two non-conventional sources of energy. One is solar, another is wind. ठीक है? Then you can take the screenshot of these particular questions. मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी लिंक्स भी शेयर की हुई है। अगर आप उतना ही करोगे ना आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी हमने छोड़ दिया। यस, सो नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. What is the pattern of magnetic field lines? What is the pattern of magnetic field lines around a straight conductor carrying current? That is concentric circles. Concentric circles whose centers lie on the wire. ठीक है? How can we say that the magnetic field is uniform inside the solenoid? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट पैरेलल लाइंस. दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड. अगर ये नहीं लिखोगे तो सीधे आंसर लिखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर इनसाइड द सोलेनॉइड. इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सर्क्यूलर करंट कैरिंग कॉइल आर डबल्ड, if the number of turns of a circular current carrying coil are doubled, then how will the magnetic field produced by it change? It will also double. It will also double. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. वेट अ सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बाय 2 turns.
ठीक है, मतलब वो भी डबल हो जाएगा. वाई? बिकॉज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज directly proportional to number of turns. Got it? Next, the magnetic field lines in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. ठीक है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइंस दिस, यू विल हैव टू शो कि जो ये इनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, दैट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर and their direction is from north to south. ठीक. Why do not two magnetic field lines intersect each other? Because if two or more lines intersect each other, then it means that at the point of intersection, the magnetic field has two directions. It has two directions at the same point. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पे वो ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस वो दो डायरेक्शन शो कर रहा है सेम पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, आफ्टर दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लिप रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? स्लिप रिंग जो होते हैं दे आर यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिकल जॉइंट टू ट्रांसमिट पावर. ठीक है, स्लिप रिंग्स क्या करते हैं? दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल जॉइंट टू ट्रांसमिट पावर. आप ये भी लिख सकते हो कि इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज between a still component and a rotating element. Next, name two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. Is this the one? Yes, ये वाला हो गया. Name two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. You can write earth wire and electric fuse. Next, name the type of current used in household supply and given by cell. हाउस होल्ड सप्लाई में हम AC यूज़ करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, और सेल में DC डायरेक्ट करंट होती है. हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बीइंग डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट? अब परमानेंट मैग्नेट जो है इट हैज़ परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ये परमानेंट होता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है. इट हैज़ परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इट इज़ टेम्पररी. ये तभी वर्क करेगा एज अ मैग्नेट जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा. क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा. और जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तब तक इट विल वर्क एज अ मैग्नेट. द मोमेंट यू विल स्टॉप गिविंग इट दैट करंट, इट विल स्टॉप वर्किंग एज अ मैग्नेट. सो इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट टू वर्क एज अ मैग्नेट. दैट इज व्हाई इट इज टेम्पररी. लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है वो परमानेंट होता है. इट हैज परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट, state the direction of magnetic field in the following case. It is inwards. फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यू कैन डू इट. प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर सारे आपके नोट्स पे होते हैं. व्हेन इज द फोर्स experienced by
a current carrying conductor? When is the force experienced by a current carrying conductor placed in the magnetic field? जो कि प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो लार्जेस्ट कब होता है वो फोर्स? When it is largest? When the direction of current is perpendicular. I'll write it. When the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic fields, ठीक है, तभी वो लार्जेस्ट होगा. नेक्स्ट, a charged particle enters at right angle into a uniform magnetic field as shown over here. What should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field? The charge will be positive. It will be positive. The charge will be positive, ठीक है. Next, two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. Yes, magnetic field lines जो कि लिंक होंगी coil B के साथ, they will also change, ठीक है. Hence, due to change in magnetic field lines, there is an induced current in coil B, ठीक है. So yes, magnetic field lines linked with coil B will also change. So due to change in magnetic field lines, there is an induced current in coil B as well, ठीक है. Next is identify the poles of the magnet in the given figure. That is from north to south, ठीक है. So ये questions है 2 marks के. Take a screenshot of it. Okay. Let's come to the next chapter, that is light reflection and refraction. The refractive index of glass is 1.42. What is the meaning of the statement in relation to speed of light? It means speed of light in a glass is lesser by this factor as compared to speed of light in vacuum. Okay. So speed of light in a glass is lesser by this factor as compared to speed of light in vacuum. Next आप खुद कर लोगे, इसमें ड्रॉ करना है. Which kind of mirrors are used in the headlights of a motor car? It also is easy for you. Next is, why does a ray of light bend when it travels from one medium to another medium? Because of refractive index. Because of refractive index which changes the speed. Okay, because of the speed, because of the change in speed, ठीक है, and that happens due to refractive index. ये भी आप खुद कर लोगे. Define refractive index, ये notes पे easily आपको मिल जाएगा. Then 7th one, why a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror gets reflected along the same path? क्यों? क्योंकि जो center of curvature है, it will retrace its path. It will retrace its path as it acts as a normal, because it acts as a normal, ठीक है. Next,
What kind of the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? What kind of image will be formed? The nature of the image will be virtual image. Okay, between which two points, one second. Between which two points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3? Focus and center of curvature. Okay, next. Between which two points related to a concave mirror should an object be placed to obtain on a screen an image twice the size of the object? Focus and the pole. Okay, what is the SI unit of power of lens? Diopter. What is meant by power of lens? ये आपको मिल जाएगा easily. Next. If the image formed by a lens is diminished in size and erect for all positions of the object, what type of lens is it? Concave. Name the point on the lens through which a ray of light passes undeviated. That is optical center. What is the units of refractive index? It is unitless. It is unitless. So here are the questions, 2 marks questions, so you can take the screenshot. What happened to it? Okay. Then we come to human eye and the colorful world. So next is human eye and the colorful world. Name the part of our eyes that helps us to focus near and distant objects in quick succession. That is ciliary muscles. The sky appears dark instead of blue to an astronaut. State its reason. What is the reason? Key scattering of light does not take place outside the Earth's atmosphere. That is why it appears dark to them. ठीक है? Because scattering of light does not take place outside the Earth's atmosphere. Next. Okay, Tyndall effect, you can do it. Give an example of optical for ये भी आएगा, ये भी dispersion of light. Then we'll go straight away to question number 10. Human eye has dash lens. Human eye has a convex lens. The nature of the image formed at the retina of human eye is real and inverted. Okay, range of vision for normal eye is dash to infinity, 25 centimeter to infinity. Corrective lens is required by a person who can neither clearly see objects placed at the near point nor at infinity. Actually, it's a statement. You have to state whether it's true or false. So it is true. Okay. Concave lens is used to correct hypermetropic eye. False. Concave lens is used to correct myopic eye. It's true. Violet color has the least wavelength among all the other components of a white light. True. Red color suffers minimum deviation while passing through a prism. It's also true. Then 17th, yes. Electrical signals from light sensitive cells are sent to the brain via optic nerve. It's also true. Hotter air has refractive index. Choose the most appropriate option. Lower than cooler air.
Okay, hotter air has refractive index lower than cooler air. Next, white light is dispersed into 7 colors. The time difference between actual and apparent sunset is about 2 minutes. Light enters the eye through cornea. Short-sightedness is also known as myopia. Did I say myopia? Yeah, myopia. Dark muscular diaphragm that controls the size. Dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil is iris. Okay. Which part of the human eye regulates and controls the amount of light entering it? Which part of the human eye? Pupil. Okay. Then here we go with assertion, reason. Just take a screenshot of it. Fine. So that was all for this particular video, and I'm going to get the next video. लॉन्ग टाइप तो इसमें से आएंगे ही नहीं, सो नो नीड टू डू लॉन्ग टाइप आंसर्स. ठीक है. मॉडल टेस्ट पेपर जो है आपके साइंस का, वो मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ. ठीक है. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रिपेयर वेल. ठीक है.